exclusive, bringing you the live and exclusive coverage of Gonipora Premier League, the inaugural match between MCC Behrampora and Sephora Cricket Club. And the news from the centre is MCC Behrampora, the side have won the toss. The captain decided to bat first. As during the pre-match show, he said that we're going to bat first, we'll look to put runs on board. And we have Shizan out there in the centre and has been joined by Arshid Mir. And in the meantime, Mohsin has got the ball in hand. He's bowling from the far end. And they have 16 runs on. But we have joined you a bit late here because of a slight technical issue. But now it works fine. It's working absolutely fine now. 16 without loss in over number 1. This is a good start for MCC Behrampora. Shizan is batting on a solitary 1. Arshid Mir is batting on 14. Mohsin starts the fresh over. And first ball starts with a good delivery, a bit of pace, a tall, lanky bowler he is, as you can see on your mobile screen. As he was trying to go on the offside, a good number of fielders he has. He has that slip in place, waiting for the outside edge. Third man has been placed outside the 30-yard circle. Here's that point in place with backward a point. Now that slip fielder moves down to the gully area. Cover and extra cover are all inside the ring. Long off is out, mid on is in, short square leg and fine leg in place. So Mohsin gets ready once again, bowling from the far end and driven on the up. And this is in the gap and it will run down to the long on boundary for 4. With mid on inside the ring, he had no chance at all. And this time Shizan Mir finds the middle of the bat, nicely on drivers it. And it just goes to the left of the bowler. Mid-on was bit wide and he had no chance at all. Runs away down to the boundary for 4. In the meantime, next ball slashes hard. It's up in the air and third man just watches the ball. It goes over his head. 1 bounce and into the fence for 4. Beautiful shot this time. Just flashes hard onto that one. Gets it over third man. And for a second, for a moment, I thought third man is interested. But the ball just goes over his head and trickles away into the fence for 4. This is a good start for MCC Behrampora. A ferocious start. They got 24 on board without losing a wicket. As Mohsin conceding back-to-back boundaries. Now comes up with a good delivery. And just pushes it further up to the batter. And hoping for a gentle swing. The ball just goes away from the batter. He was trying to drive the ball on the up. But gets beaten and it goes into the gloves of wicketkeeper. And Basharat Beg, Walaikum Salam, is the first viewer who is just commenting on the live broadcast. Thank you very much, Basharat, for your love and support. And if Almighty Allah wishes it, definitely will definitely providing the services. Dear Sheikh Fahim, thank you very much. Brother Shah Shahid is also watching the game. Alaikum Salam, dear viewers. Thank you very much for joining us as we are live from the sports field of Babagund, where MCC Behrampora is taking on Sephora Cricket Club. Batting first, 24 on board without losing a wicket. They will look to get off to a good start. You know, the captain trusting his batters to go out there and bat positively. We just need runs on board. In the meantime, backs away, tries to go over covers, but doesn't connect at all and it goes into the gloves of wicketkeeper. 24 without loss. Shizan batting on 9 of 7. Arshid Mir has got couple of fantastic shots. He's batting on 14 of 5. Mohsin concedes 8 in the first as dots and server number 2 as well. Mir Manzoor it is, watching from Ashmukam, South Kashmir. And Sheikh Fahim just pinning down a funny comment there. Jameel Ahmed is continuously watching us, continuously showing your love and support. And thank you very much for backing us, and it really means a lot. Inspired by our commentary, and absolutely we wish you best of luck if you're using a bilingual during live sessions. And he's mentioning that my confidence is just at peak, so we wish you best of luck from our side, and may you touch the skies. Afaq Mir, and mentioning Shizan is a young gun from Behrampora and needs to bat well today. You've been given the chance, Afaq, so you just need to bat well. You just need to live up to the expectations of the skipper. You've been given the chance to bat at the top of the order.
And this wicket looks really good. It's nice batting surface. And in the meantime, Owas Lone goes once again. Pulled away, and it has gone all the way for 6. Arshad Mir just pounces onto that delivery. It was a harmless ball and nicely picks the length and smashes it over wideish square leg region, and all the way it goes for half a dozen. This is great ball striking. This is a fantastic start for MCC Behrampora, the kind of start they wanted in this game. You're batting first and you're absolutely punishing the bowlers at this stage. 6 coming off the second ball. In the meantime, Arshad looks on song today from the word go. He is just timing the balls nicely. Owas has been expensive, has conceded 22. Next ball, a good delivery, and he beats the batter, gets an inside edge and runs away down to the fine leg boundary for 4. A lucky shave, lucky escape for the batter there. He had no answers where the ball was going. He was just crouching low to defend the ball, and he gets a thick inside edge and it trickles away fine into the boundary for 4. Though it wasn't a convincing one, it wasn't confident from the batter, but he will take it. Runs 4 coming, and it takes the score to 34 without loss. From the far end, Owas goes once again, goes onside. This is up in the air and just past the fielder there. Trickles down to the mid-wicket boundary until the fielder tidies up. He mops things up. 1 more run taken. For a moment to the batter, his heart could have been in his mouth. Definitely was a close chance there, as the fielder at scare leg tried his level best, but it just eludes him. Outstretched hands, and 1 more run taken, and that takes the score to 35 without loss. Sohail Mukhtar, welcome brother. Mir Basharat is also enjoying and watching the game. And may I remind you once again, we are watching the game live and exclusive on Global News Network as Gonipora Premier League. This is the inaugural game. This one is a beautiful shot. That is gorgeous shot of the match until now from Shizan Mir, and it has gone over backward point boundary for a 6. Shot wide outside off, and Shizan Mir just pounces onto that one and smashes it away for half a dozen, gets the maximum and takes the score to 41 without loss. It's a rollicking start for MCC Behrampora, as they are absolutely punishing the bowlers. Next ball goes off the back foot and covers the line of the ball with bat and pad close to each other. On drivers it until that mid-off fielder goes and stops the ball. There is no chance of a run. 3 overs gone, 41 without loss. This is a blistering start. MCC Behrampora making a statement in the inaugural game, with both the batters looking very comfortable, both the batters padding with ease, and shot selection until now has been absolutely good. You've seen Shizan Mir, some fantastic, some marvelous, some spectacular shots coming off his bat, and Arshad Mir batting with good intent, batting with positive intent. He is batting on 25 of just 9 bowlers. Shizan batting on 15, and they have provided MCC Behrampora with a fiery start, with a ferocious start. And Sephora Cricket Club, they need to understand now it is the time to limit the chances of batters. Down comes the batter. It's a vicious delivery, a venomous ball. Wicketkeeper had no chances at all, and it has gone down to the boundary for 4. And problems continue for Sephora Cricket Club. You need to bowl wicket to wicket. You just need to contain the run flow of the batters, but coming with a vicious and venomous ball, and that one was rising, and wicketkeeper had no chance. It just rockets away down to the third man boundary for 4. Starts with 5 wides there. 46 it should be. Once again takes the outside edge and goes down to the third man area. Will get a single there. Was trying to slash the ball hard, and it slashes hard, gets a single though, and it takes the score to 47 for the loss of for no wicket. Behrampora starting exceedingly well. Skor kecil ya kan? Kita gini sih.
It's not switch. It's a wide way. Wide switch. Then one. Mansoor is watching us from Mir Basharat. Next ball hits it in the air, clears the infield once again. Three fielders going behind the ball. Who is going to cut it off? As the fielder from backward up point cuts the ball off, and until then 2 more runs have been added to the score. And he got Basharat big. Thank you very much, brother, for your 11 sports. Shaukat Para Jamil, and we'll definitely try to help you wherever you need the guidance. We'll be always available. Shahid Butt watching from Rama Blaster, sending in love for MCC Behrampora. Mansoor and Shabir Naiko is watching us from Nopura Kalam. And this live broadcast is brought to you by BMZ Group, Strakpora, Mansoor Decorations at Rafiabad, and Al Maida Bakery, Rahama. Mir Fayaz will definitely provide you the information, as at this stage, at this point of time, I don't have the exact information. Is this a village level tournament? But we'll definitely provide you the information. And Mansoor Decorations at Rafiabad is the proud sponsor of our live broadcasting, and we thank him for providing his love and support. He is watching us from Swain Rafiabad. Walaikum salam, Mansoor. Thank you very much for joining. 48 it is without loss. A good start for MCC Behrampora. And the dugout will be relaxed at this stage. The start they have got at the first up without losing a wicket, and they have started in a positive way. It's a belligerent intent with the bat, a positive and intentful batting we have witnessed from both the batters. Arshid is going all guns blazing at the moment. He's striking at 260. We got Shizan Mir, a terrific youngster, a young batter, just coming into the limelight, and he is just stealing the show with the bat. In the meantime, Mohsini's got pace and tries to drive the ball on the up, gets a thick inside edge. The ball is trickling away in the gap. Wicket keeper just goes behind the ball. He is just sprinting behind. In the meantime, 2 more runs have been added, and with a couple, it's 50 up in quick time for MCC Behrampora. Mohsin Hassan has conceded 17 runs until now. With that couple of runs, Arshid moves to 28. Shizan Mir is batting on 16. And this opening duo, this opening side of MCC Behrampora, setting that stage on fire with a good batting intent. And as I said earlier, MCC Behrampora, the dugout will be relaxed, and hoping these two continue the batting like the way they are batting, with positive attitude. And this one is short and wide, nicely guides it away down to wideish. Third man just runs it down, easily riding the bounce, and steers it nicely in the gap, and he gets a single, takes the score to 51. We talk about during the pre-match show, the captain Tahir Mir of MCC Behrampora, he said that we have a good depth in the batting. We have more depth in batting than our bowling lineup, so we will be eyeing to post a good score on board. We will be eyeing to get up to 170, 180, and then give our bowlers a chance to have a go at this and bowl well. Next ball goes inside out. That is one of the terrific shots which have been played until now in this game. Cannot define this shot. This is marvelous as he goes over wideish cover for a 6. Shizan take a bow. That is shot and a half. That is a glorious shot coming off his bat. Just screams it over covers for a 6. Timers that one well. He looks a natural and a sweet timer off the ball. In the meantime, a sliver ball goes onside and goes down to the long on boundary for 4. Just dealing in 4s and 6s, both the batters of MCC Behrampora. And straight away a lot of pressure, enormous pressure on Sephora Cricket Club. You see the bowlers are leaking runs at will. They're just giving runs, and runs are flowing like water here. 61 after 4 overs, 15.25 the run rate at this stage. MCC Behrampora are going, and both the batters looking absolutely dangerous with the bat. Azadar watching from Ferozpura, and Manzoor Baba as well watching from Manzoor Sports Watergam. Juni Babu, Walaikum Salam, Batishfaq, Aman, Amin, and
Agro Kingdom, Behrampora. What a shot that was. We're talking about that shot over extra cover. Call it. That was so beautiful, so gorgeous. And Shizan was just looking wow there. 4 overs have been bowled. They have 61 runs on board without losing a wicket. This is a fantastic, this is a quality start, as I said, getting MCC Behrampora off to a flyer and without losing a wicket. Both the batters are batting with ease, no problems whatsoever, and enjoying their time out there in the middle and not letting the bowlers of Sephora Cricket Club to settle down. They have been punished completely, looking off colour, and a positive intent is doing wonders for MCC Behrampora. In the meantime, the captain has been forced to go for the bowling change. 61 runs on board, and the captain now going for a change. We'll have to wait and watch. He's gone to Sohail Bashir to continue. And trusting Sohail Bashir here, we'll have to wait and watch. He's just having a word with his captain, just trying to manipulate the field, just trying to have the fielders at the right positions. I guess he's gone for the spinner. He has mid-off inside the ring. He has cover. He has backward up point. He has gully. He has a short third man. So close-in fielders 1, 2, 3, 4 right next to each other, and on the onside long on and deep scare leg is out with the first ball of the fresh over. And the batter just taps it on the offside with an open face. The fielder is inside the ring, and there is no chance of a run. And But Irfan is giving an information regarding the Shalabug Super League, where Sultan Warriors will face Royal Goodwill. A tough clash this is today, and he is mentioning anyone who enters the play fielder from the crowd and who interferes in the game, strict action will be taken. And then we have got Uzair Mushtaq watching from Gun Karim Khan. Over number 5 in progress. Sohail Bashir starting with the wicket-to-wicket stuff. He's just bowling stump to stump, and this one is down the leg side, swept away and into the fine leg boundary for 4. He was bowling well, but now overcompensates this time, bowls a terrible delivery. It's down the leg side, and Arshid Mir just helps that one away, sits down, nails the sweep shot, goes over fine leg and one bounce into the fence for 4. It's a high-fi time for Sephora Cricket Club. The bowlers need to pick up wickets once again. It's down the leg side, and he has been caught. Excellent job behind the stumps by the wicket-keeper. He has been strangled down the leg side. As I was telling you, just need to find the ways of picking wickets. It wasn't a wicket-taking delivery either. He was just trying to run it away down to the fine leg, gets the edge. And excellent work done by the wicket-keeper behind the stumps. Just gobbles that one. It is a tough catch to take, but he has done exceedingly well. And here is the first wicket for Sephora Cricket Club. Oh boy, they desperately needed to break this stand, as both the batters were taking the game away. Both the batters were absolutely punishing the bowlers there. It's a wicket against to the run-up play, as Arshid departs after playing a handy cameo for the team. 33 of just 15 bowlers. Sohail Mushtaq being introduced as a bowling change. He has delivered. He has broken the stand, and Sephora have the first wicket of the game. 65 for the loss of 1 as we are in over number 5. MCC Behrampora getting off to a fly start, and you can see bowler and wicket keeper, they were straight up, and that was a good job. That was a fantastic job done by the wicket keeper behind the stumps. Arshad Yusuf now walks down the centre. Mir Basharat, Dar Javed, Supi Parvez is right next to me, and he will be just in the meantime wraps him on the pad. Appeal of LBW, and they are just pleading to the umpire, but he isn't interested at all. He was just trying to work the ball on the onside. I guess the ball was strangled down the leg side, you can see, and he was turning it on the onside. And close shave. It looked close to the necktie, but umpire isn't interested at all. 65 for the loss of 1 it is. Arshad Yusuf is yet to get off the mark, just arrived at the crease. Next ball just comes forward and taps it on the offside. There is fielder inside the ring. No addition to the total.
5 overs gone. An excellent over of Mir Sohail where he just conceded 4 and has got a wicket as well. 5 overs gone. MCC Behrampora after a strong start, 65 for 1. शुक्रिया फिरदौस आपका। तो बाबागुंड के स्पोर्ट्स फील्ड पर गोनीपोरा प्रीमियर लीग का ये इनॉग्रल मुकाबला एमसीसी बहरामपुरा और सेफोरा क्रिकेट क्लब के माबैन इस वक्त जारी। एमसीसी बहरामपुरा टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 65 के स्कोर पर 1 विकेट गिर चुकी है। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अरशद यूसुफ और शीजान मीर जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं एमसीसी बहरामपुरा के लिए। महराज मीर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्बास मुगल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बट आशिक भी हमारे साथ जुड़े हैं मीर बशारत के साथ। डार जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद हिडन ब्यूटीज पेज से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं कि चंदू साहब बारामूला में आज कंडी सुल्तान और 11 स्टार कंडी के दरमियान मुकाबला होगा जो कि हिडन ब्यूटीज पर बराह रास्त आप देख सकते हैं। आफाक मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरशद यूसुफ लेजेंड ऑफ बहरामपुरा क्रिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। लेग स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में, और बल्कि कुल मिलाकर 2 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 67, 1 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर के बाद। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एमसीसी बहरामपुरा की जानिब से अरशद यूसुफ अब एक मतलब फिर लेग स्टंप से बाहर गेंद देखना होगा। वाइड बॉल का इशारा अब आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 68, 1 विकेट के नुकसान पर। आफाक मीर बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास मुगल भी हमारे साथ जुड़े हैं महराज मीर के साथ। महराज मीर और मन पांडो बशारत बट आशिक भी हमारे साथ जुड़े हैं मीर बशारत के साथ। अच्छी गेंद और वहां पर देखना होगा गालिबन जो है आउट हुए हैं बल्लेबाज, देखना होगा। जी हां, और ये दूसरी विकेट गिरती हुई कॉट क्या, जी हां कॉट बिहाइंड हुए हैं। विकेट कीपर ने कैच लिया और ग्लव्स को छूने के बाद गेंद जो है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। तो दूसरी विकेट गिरती हुई अरशद यूसुफ की और अरशद यूसुफ बिना खाता खोले पवेलियन वापस गए। इशफाक अहमद बॉलिंग मार्क पर है, उनके खाते में जाने वाली पहली विकेट और पहला ही ओवर फेंक रहे हैं इशफाक अहमद सेफोरा क्रिकेट क्लब की जानिब से। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। एमसीसी बहरामपुरा के 2 खिलाड़ी जो है पवेलियन वापस जा चुके हैं। 68 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। डार जावेद वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। महराज मीर हमारे साथ जुड़े हैं मीर बशारत के साथ। जमील अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं उजैर मुश्ताक के साथ, और इरफान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो है ये 6ठे ओवर का खेल जारी है। इशफाक अहमद की यह गेंद, इस मरतबा गेंद को खेला हवा में शॉट, लेकिन महफूज शॉट और फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा। गेंद की रफ्तार जो है बॉडी लाइन के करीब थोड़ी कम होती हुई इस दौरान दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ एमसीसी बहरामपुरा का 70, 2 विकेटों के नुकसान पर 5.2 ओवर्स के बाद पारी का ये 6ठा ओवर जो है जारी है। बाबागुंड स्पोर्ट्स फील्ड और गोनीपोरा प्रीमियर लीग का ये इनॉग्रल को खुद ही फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 70 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। इशफाक अहमद है बॉलिंग मार्क पर, अपना पहला ओवर आए और 1 विकेट हासिल की इशफाक अहमद ने। अगली गेंद के साथ राशिद सामना करेंगे। अच्छी गेंद, एक मतलब फिर उछाल कट करने की कोशिश। गेंद जो है बल्ले के ऊपर से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। राशिद नए बल्लेबाज आए हैं जो कि अब एक मतलब फिर सामना करेंगे इशफाक की गेंद का। इशफाक अहमद है बॉलिंग मार्क पर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। अगली गेंद को खेल दिया है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर है एमसीसी बहरामपुरा का 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। इशफाक अहमद अपना पहला और कामयाब ओवर उनका साबित होता हुआ अब ओवर की आखिरी गेंद के साथ ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, इस मरतबा जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, लेकिन कहा जाएगा कि ब्लाइंड स्ट्रोक और गेंद जो है बल्ले और पैड के दरमियान से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात में हमें ज़रूर जो है आगाह कीजिएगा कि आप तक हमारी लाइव नशरियात कैसी आ रही है। अगर इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश होगी तो बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। डार जावेद, इशफाक मीर हमारे साथ जुड़े हैं अब्बास मुगल के साथ, और फैयाज भट्ट भी हमारे साथ मराजी गुंड से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैयाज साहब जुड़ने के लिए। इजाज फारूक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वॉचिंग फ्रॉम मराजी गुंड, ये फैयाज भट्ट साहब लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बॉलिंग मार्क पर अब इशफाक अहमद के कामयाब ओवर जो है इशफाक अहमद का वो मुकम्मल हुआ। 1 ओवर किया, 5 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया अरशद यूसुफ के रूप में। अब पारी का 7वां ओवर फेंकेंगे। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजमूई स्कोर है 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में एमसीसी बहरामपुरा का अरहान इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम। मंसूर डेकोरेशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहतिशामुल हक लिखा है। फयाज भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सोहेल बशीर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर और सामना करेंगे उनकी गेंद का शीजान मीर। बैक फुट पर गेंद को खेला है, रन के लिए दौड़ पड़े और रन मुकम्मल होता हुआ। मंसूर डेकोरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अगली गेंद सोहेल की बैक फुट पर गेंद को खेलने की कोशिश राशिद की, हालांकि गेंद जो है बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छू गई और विकेट कीपर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 7वें ओवर का खेल जारी है और कुल मिलाकर स्कोर जो है इस वक्त 71, 2 विकेटों के नुकसान पर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। अगली गेंद ओवर द विकेट, सोहेल की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यूसुफ के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस दौरान कॉट एंड बोल्ड किया गया है यहां पर शीजान मीर को, जो अभी तक के वाहिद बल्लेबाज थे जो ऐसी लय में नजर आ रहे थे, वो कॉट एंड बोल्ड हुए हैं। जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कॉट एंड बोल्ड हुए सोहेल बशीर की गेंद पर। शीजान मीर जो है वो आउट होकर पवरलाइन वापस जा चुके हैं और तीसरी विकेट गिरी एमसीसी बहरामपुरा की 70 के मजमूई स्कोर पर। 70 के मजमूई स्कोर पर ये 72 के मजमूई स्कोर पर यह तीसरी विकेट गिरी एमसीसी बहरामपुरा की। दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से रियल टाइम में, और इस तरह के कैचेस अमूमन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गेंदबाज के लिए, लेकिन यहाँ सुहेल अब्बास की तारीफ करनी होगी जिन्होंने इतना तेज स्ट्रोक जो है उसे गेंद को जो है अपने मजबूत हाथों में कैद किया। अशरफ डार हमारे साथ जुड़े हैं और गालिबन यूनुसुर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फैयाज अहमद फैयाज भी मत्सल कुपवारा से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रेगुलर वेवर, और इनके साथ साथ बिलाल अहमद जुड़े हैं, रियान भी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ जुड़े हैं, हैदर बेग पट्टन से गालिबन, अरहान इम्तियाज जुड़े हैं, फैयाज अहमद फैयाज हमारे साथ मत्सल कुपवारा से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेगुलर वेवर 72 स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। बहत्तर 3 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अब बॉलिंग मार्क पर जो है बुलाया गया है
अब देखना होगा, हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन गेंद जो है टॉप एज लिया और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री से बाहर 6 रन्स के लिए। टॉप एज लिया और गेंद सीधे 6 रन्स के लिए जाती हुई मैदान से बाहर। ये छक्का आता हुआ नए बल्लेबाज के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ इन 6 रन्स की मदद से 79 गालिबन हो चुका है। बल्कि 78 हो चुका है। इशफाक अहमद है बॉलिंग मार्क पर, राशिद जो है वो एक मरतबा फिर गेंद का सामना करेंगे। इस मरतबा अंदरूनी किनारा, गेंद फाइन लेग की जानिब जाती हुई उस और कोई फील्डर तैनात नहीं और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री को छूती हुई 4 रन्स के लिए। एक और चौका आता हुआ और इन 4 रन्स के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 82 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद 4 रन्स के लिए फाइन लेग बाउंड्री से बाहर जाती हुई 82 स्कोर बढ़ता हुआ। इस दौरान अगली गेंद और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मीर हिलाल वालेकुम सलाम, मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जियान भट्ट के साथ, सुहेल मुख्तार हमारे साथ जुड़े हैं, फैयाज अहमद फैयाज के साथ, अरशद। ये बहुत ही बढ़िया कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से विकेट कीपर ने अपने दाएं जाने पूरी तरह से डाइव लगाकर यह कैच हासिल किया। बड़ा खूबसूरत कैच विकेट कीपर के जरिए और पूरा डाइव लगाया और कैच हासिल किया विकेट कीपर ने। तो दूसरी मर्तबा इस मैच में हम देख रहे हैं कि विकेट कीपर ने एक अच्छा जो है काम निभाया अपनी टीम के लिए। आशिक हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ फैयाज अहमद फैयाज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मंसूर डेकोरेशन भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंसूर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार भेजने के लिए ज़रूरत नहीं है। और ये 82 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर एमसीसी बहरामपुरा का स्कोर। आउट होने वाले बल्लेबाज राशिद। 8वें ओवर का खेल जारी है। ये इनॉग्रल मुकाबला इस वक्त जारी है बाबागुंड स्पोर्ट्स फील्ड पर। आकिब नज्जार भी हमारे साथ जुड़े हैं। कासूवानी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिल केजीएफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साहिल केजीएफ जो है मावर बडगुंड से हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ साथ शब्बीर अहद भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने शब्बीर अहद। और व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूंगा कि एमसीसी बहरामपुरा और सेफोरा क्रिकेट क्लब के दरमियान ये मुकाबला इनॉग्रल मुकाबला बाबागुंड प्रीमियर लीग का जारी है। और इसी इनॉग्रल मुकाबले में एमसीसी बहरामपुरा की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इशफाक अहमद की गेंद नए बल्लेबाज के लिए कॉट है और एक मरतबा फिर जो है यहां पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से नए बल्लेबाज आए और ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद पर छेड़छाड़ की और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। यह आपको एक मरतबा फिर हमने रीप्ले में दिखाया कि किस तरह से जो है ये एक और विकेट गिरी 82 के स्कोर पर। 82 के स्कोर पर ये एक और विकेट गिरी। दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये विकेट गिरी और रियल टाइम में। और यहां दूसरी विकेट गिरी, बल्कि ये चौथी विकेट गिरी है एमसीसी बहरामपुरा की। हालांकि आगाज अच्छा मिला था, शीजान जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब एक अच्छा आगाज मिला था। ये आप रियल टाइम में देख सकते हैं किस तरह से ये विकेट गिरी नए बल्लेबाज की। आए और चलते गए, आए और चलते गए, तो इस तरह से ये एक और विकेट गिरती हुई।
जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ था ना ना तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हारिस मंजूर जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंसूर डेकोरेशन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके साथ बात होगी क्योंकि आपके साथ जो है इस हवाले से कमिटमेंट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो फिलहाल जो आपने हमारे खाने पीने का इंतज़ाम किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके साथ ज़रूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, और शब्बीर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ साथ शब्बीर वगे हारून भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 82 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर इशफाक अहमद हैट्रिक पर है, और क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे ये देखना होगा। इशफाक अहमद बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, हैट्रिक वाली गेंद के साथ, और निसार MIP जो है वो सामना, बल्कि ये निसार मीर है, ये सामना करेंगे। हैट्रिक होगी और इस मतलब गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की जानिब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 84। 5 विकेटों के नुकसान पर निसार मीर ने अपना खाता खोला 2 रन की मदद से। इशफाक अहमद जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है, उन्होंने अभी तक किसी गेंद का सामना नहीं किया है। 9वें ओवर का खेल जो है नौवें ओवर का खेल जारी है, और यहां आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूंगा कि मजमूई स्कोर है 84। सुहेल बशीर जो है वो बॉलिंग मार्क पर है। मैं माजरत चाहूंगा, इशफाक अहमद का ओवर मुकम्मल हुआ था। अब अगले ओवर में उनकी पहली गेंद जो है वो हैट्रिक वाली गेंद होगी। सुहेल गेंद की लेग स्टंप से बाहर गेंद, विकेट कीपर के पैड को छूने के बाद फाइन लेग की जानिब जाती हुई गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पर बल्लेबाज ने। वाइड बॉल का अब इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन की मदद से 86। 5 विकेटों के नुकसान पर निसार मीर जो है वो अब एक मतबा फिर सामना करेंगे इशफाक की गेंद का, बल्कि सुहेल बशीर की गेंद का। गेंद को खेला, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 86 स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए MCC बहरामपुरा का 5 विकेटों के नुकसान पर। इस दौरान आबिद वानी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद साहब जुड़ने के लिए, और हमारे पिछले साल रेगुलर वेवर थे। इस दौरान हवा में शॉट, लेकिन महफूज वहां पर फील्डर जो है कैच ले नहीं पाए, और इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में। ये राशिद नजीर जो है अरशद यूसुफ और राशिद इशफाक के हवाले से जानकारी लिख रहे हैं कि उन्होंने गलत शॉट सिलेक्शन के दौरान जो है अपनी विकेट गंवा दी। इस दौरान बल्ला जो है आखिरी लम्हात पर गालिबन देने में कामयाब हुए बल्लेबाज। क्या बल्ले से छूने के बाद गेंद गई या पैर को? जी नहीं, बल्ले से छूने के बाद गेंद फाइन लेग की जानिब गई 4 रन के लिए। शेया शब्बीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आबिद वानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर रशीद जुड़े हैं। मंसूर डेकोरेशन जो हमारे स्पॉन्सर है शाहिद मीर के साथ सोइन रफियाबाद से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अलमैदा BMZ ग्रुप स्ट्रकपोरा रफियाबाद, अलमैदा बेकरी रोहामा और मंसूर डेकोरेशन रफियाबाद की वसादत से आप तक ये रनिंग कमेंट्री पहुंच रही है। 9वें ओवर का खेल जारी है। मजमूई स्कोर है MCC बहरामपुरा का 91। 5 विकेटों के नुकसान पर ओवर जो है मुकम्मल हो चुका है सुहेल अब्बास का, तो 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 95 स्कोर। शाहिद मीर बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल रफियाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you very much, Sophie Parvez, as it has been a heyday for
Sephora Cricket Club after a good start provided by both the openers. The bowlers have really replied well, and they have been excellent with their lines and lengths, but there have been a couple of bad shots. The shot selection hasn't been up to the mark, and we've seen 4 batters were caught behind, but just trying to flirt with those wideish deliveries. And now they are back into the pavilion with 5 wickets down. Very number 10. Full delivery driven on the up nicely. Oh, there is a misfield. And should have been stopped there inside the ring, and it could have been a dot ball, but it allows the batters to cross for a single, and that single takes the score to 92 for 5. The game was progressing nicely for MCC Behrampora. The batters were batting absolutely well, but all of a sudden there has been a mini collapse. 5 wickets down. They lost their first wicket on 65. But then the batters tried to flirt with those wideish bowlers. 3 or 4 catches have been taken by the wicketkeeper behind the stumps, and he has been kept busy today. And well, I can say the bowlers were just holding the horses after a great start by the batters of MCC Behrampora. They were just pouncing onto them. They were just punishing the bowlers to all corners of the ground. But then the bowlers were patient. They just regrouped and contemplated on the things what needs to be done there, what lines and lengths they need to bowl, and it has been an excellent comeback, especially by the spinners in the middle overs, controlling the game well, bowling exceedingly well, and has been they got couple of wickets, and I can say they have absolutely hit the jackpot in those middle overs. And now it lies on to these 2 batters to carry the innings forward. At this situation, MCC Behrampora need a partnership, and the 2 batters, Ishfaq and Nisar Mir, just need to understand the equation now, just need to understand the situation, bat according to the situation. It's Shahid Mir, walaikum salam, watching from Soyin. Zahoor Ahmed is watching from Dandusa. He's the chief organizer of Dandusa Premier League, and so does Rashid Nazir. Is mentioning that Rashid, Ishfaq Mir and Arshid Yusuf, they got all out while playing those bad shots. And I do agree with you, I am on board with you, dear brother, as we have continuously seen that they just were trying to flirt with those wideish bowlers and wide deliveries, and we're all caught behind the stumps. And now it's Sephora Cricket Club whose bowlers have, as I said, they just have horses, and they've been patient to regroup it as a unit, bowling exceedingly well, bowling nicely out there. And a slight issue in in the meantime, waits for the ball to come, nicely steers it, and it takes the score to a couple of runs. Over number 10 ends with that, 95 for the loss of 2. And I could tell you it was a great start for MCC Behrampora. The batters were batting nicely, but all of a sudden the captain throwing the ball to his spinners, and they replied with a wicket in those middle overs. They have been exceedingly well. They controlled it well, and tightening those crevices on the game. MCC Behrampora, a mini collapse happening in those middle overs. They lost 5 wickets quickly, and I could tell you some of the batters wasn't a good shot selection at all in the middle overs, and just trying to flirt with those wideish balls, giving those easy catches to the wicket keeper. And at this stage, 95 for 5 after 10 at the halfway stage of the game. And from here on, MCC Behrampora as a bowling unit, they just need some partnerships, those little partnerships which can do the job for them, which can do wonders for them, and to be back into this game. Otherwise, giving the bowling unit, giving Sephora Cricket Club a sniff out there, and if they manage to pick up wickets regularly, it will be tough for MCC to come back, to strike back into the game. And it's still a long way to go. 10 more overs as Tawsif join us with Muhammad and Muhammad Shafi watching from Tral. Zahoor, thank you very much. Shahid Mir and rest of the viewers, I have a request to you to share the live broadcast, and don't forget to press the follow button as well.
As I was telling you, it was a complete heyday for Sephora Cricket Club. The bowlers bowling really well in the middle overs and not letting the batters to score and not letting them to ride the start which they got. At this stage of the game, the umpires have called it for a short drinks break, and in the middle overs I tell you that a couple of wickets has reached Sephora Cricket Club, and a bit of pressure was building on MCC Behrampora, but it's a matter of one good partnership, and they will strike back. They will be surely into the contest. We'll have to wait and watch, and if a partnership gets in, it will be tough for the bowlers to save their skins at the later half of the game, at the fag end of the game. Amir Firdaus, Walaikum Salam, watching us from Gunkarim Khan with Mudabbir and Rashid Nazir. Thank you very much, brother, for your love and support. Thank you very much for your instincts. And there is a short pause in the game as the officials have called it for a drinks break. And you can see the sun shining out brightly. A bit of rise in temperatures from couple of days. And the officials calling for a drinks break. A slight pause in the game. We'll have to wait and watch how will MCC Behrampora go with the business. Can they execute their plan as well, or will it be Sephora Cricket Club who will carry the day with the ball? And it's a matter of couple of quick wickets here, and they will be straight away into the tail of MCC Behrampora after getting a good start. We always talk about these things, that it is not always you get a good start and in those middle overs you cannot control the game, and you just try to go into the shell and not try to attack the bowlers. Doesn't get those singles and doubles and an out boundary which you need in the over, and that is where the bowlers try to be heavy on you. That's where the bowlers try to create those chances when the batters doesn't show that positive intent with the bat. And Mir Firdaus, he is right next to me, and Ejaz Pare, Walaikum Salam. Thank you very much for joining us. Thank you very much for providing your love and support as the game is underway at the sports field of Babagund, where Gonipora Premier League is underway, and it is the inaugural game, the first match of the tourney going on. MCC Behrampora, a strong side, a formidable side led by Tahir Mir, batting first, and up again is Sephora Cricket Club. Both the teams have done really well until now. And I like to say this game is hanging in balance at this stage, as Sephora have got 5 wickets, and it was the middle phase where they tightened the grip over the game, getting those wickets. And now after the drinks break, the play gets resumed. Ishfaq will continue 3 for 15, and his bowling figures, excellent phase of play going on for him, and he has been excellent with the ball. First ball, it's a full in length, driven down to cover, and there is no run at all. And starts with a dot. Ishfaq goes once again and nicely taps it away, rides the bounce and steers it nicely in the gap. Will get a single, and now you could do the job in singles. There is no problem with that. He can easily milk the ball in the gaps. He can find those gaps, on the offside. That point to wideish cover area is pretty vacant. On the onside, there is just one man at Skalek. Rest of the fielders are at the boundary ropes. So you can easily get those runs. You can easily find those gaps. And once you get the gaps, once you hit the gaps, you grew into the confidence. A small little partnership will do it nicely for you. As the next ball, as the batter was trying to play it off the back foot, gets wrapped on the pad. It was going down the leg, though. There is no harm done to the batting side, and no run taken. 96 for 5. Cricket is all about those comebacks, those setbacks. The way MCC Behrampora were batting, it looked like they will definitely post a huge score on board. They still have a chance, there is no doubt about that. The way the top order batted, first 2 batters were absolutely meaning business today with the bat. But in the middle overs, after 3 or 4, after that 5th over, the bowlers regrouped. As I said, they contemplated on the things, and they have been good with their lines and lengths. They
bowled with great control, great discipline, and you can see Ishfaq Ahmed coming out with flying colours with the ball in hand, and he's just dealing the damage. Again, a good delivery, attacking the stumps, wicket to wicket stuff, as the batter just pushes it straight to the short cover fielder. There is no run. Again, an excellent over where just a single run had come, and after 11 it was 96 for 1. See, that has been the problem we mostly see when a team loses wickets, couple of regularly, and that is where a bit of pressure gets into the mind of the batters, and that is pretty evident there. You can see just saw one coming off that previous over and no intent from the batters at all, and now he just lines up for an on drive and just hits it down to long on. We'll get a single. That single takes the score to 96 for the loss of 5. Within over number 12 of the game, 8 more overs to go after that. And to break the ice, the batters just need to bat deep. MCC Behrampora, they still have a good batting lineup, and this one he winds onside, up in the air and gone at mid-wicket. One more wicket fall is. He was trying to go for the big shot. He was trying to hit the jackpot there, but unfortunately he wasn't able to clear the boundary ropes, and mid-wicket fielder settles under it and completes a good catch there. One more bites the dust as MCC Behrampora lose the wicket number 6 on 97. Sephora Cricket Club, the bowlers doing it nice, and they are absolutely making rude stuff. It has been a tough journey after that over number 4, and the way the bowlers have responded to the critics when the batters were absolutely going hammer and tongs. Now a wicket again as to the run-up play. As I told you earlier, pressure mounts on the batter when you face those dots, when you consume those dots. Couple of wickets falling in the middle overs, and the batters completely going into the shell, and it has completely brought them to their knees. MCC Behrampora not learning the lessons, what they need to do out there. You're losing wickets, and they just need to bat now, and it looks tough from here on to play those full court of overs with 6 down. Again, a good delivery from Irfan, and you can see the captain leading from the front, and once again goes into the gloves of wicketkeeper, and leads the dot, Azad Ashraf, and is sending in best wishes for Mohsin, and Akib Ramzan sending in love for MCC Behrampora. And next ball just shapes away from the batter, tries to guide it away. There is no connection at all. And once again the ball goes into the gloves of wicketkeeper. Excellent stuff with the ball, and this has been a golden phase for the side of Sephora Cricket Club. Once again in the air and just short over the fielder's head, and will definitely run down to the third man boundary for 4. Wasn't convincing again, was in the air. And the fielder at third man tried his level best, and the ball just eludes his outstretched hands and runs away down to the boundary for 4. 100 coming up for MCC Behrampora. They are 101 for the loss of 6. And next ball finds cover fielder inside the ring. There is no addition to the total. It is a dot ball after 11.4 overs, 5 overs. It's 101 for the loss of 6. Final ball of over number 12 coming up, and again punches that one away, but doesn't time it well. Cannot place it in the gap, and he leads to dot. Over number 12 ends with a dot. It's 101 for 6. As I was telling, it is still a lot of time, plenty of time left in the game, and MCC Behrampora just need their batters to get a partnership here, otherwise things could look bleak for them. And
After riding on a good start, the batters were not able to make the start count, which was provided by the two openers. And I could say last 36 runs have come off at least 8 overs, or 7 overs, 6 wickets in the meantime. And that is why I mentioned that it's a golden phase of play going on for Sephora Cricket Club. First ball up in the air, and the fielder at point was very late to react, and he got hands to the ball, but unfortunately it goes down. What was the batter doing there? That was a lamb and tam push, and it went up in the air, and the fielder at point was very late to spot the ball, and ultimately it goes down. That should have been taken once more. It could have been a wicket again for Sephora Cricket Club. At this stage, as I said, they're just holding the horses and hitting the right areas, the bowlers. Irfan, it was with the first ball there was a chance, created the chance, but the fielder there was a bit late. Although he got hands to the ball, but it goes down. And first ball, and now next delivery just tucks it down to third man, will get a single. Irfan, who bowled in the power play, was a bit expensive. 28 is what he conceded. And now a single takes the score to 102 for the loss of 7. It could have been a different story. It could have been a tough story for MCC Behrampora today. And the fielder there at point, he just watches now. He isn't happy at all. You can see his face looks a bit gloomy. In the meantime, next ball chips the ball in the air down to mid-wicket. The batters will have to settle for a solitary single. And that single takes the score 103 for 6. And this live broadcast is brought to you by BMZ Group Strakpura, Almaida Bakery, Rohama, and Mansoor Decorations at Rafiabad, the proud sponsors of this live broadcast. And next ball, solid in defense, was Ishfaq. Just bowled his forward, plants his left leg forward, and pushes that one back to the bowler. There is we are in over number 13, 103 for the loss of 6. As Irfan operating from the far end, once again taps it on the offside, but finds the fielder inside the ring, the man at gilly, and he denies them a single. Doesn't let the batters to rotate the strike. At this stage, MCC Behrampora find themselves in a bit spot of bother, as they kept losing wickets. Doesn't count on the chances, doesn't count on the start they got today. And it has been an excellent phase, a good phase going on for Sephora Cricket Club. Irfan Hassan goes again, goes onside in the gap this time, and will get a boundary after a long time. And he winds onside, targets that Skalak region, and more importantly, he was finding the gap and runs it down to the Skalak boundary for 4. And that should do it. That will keep the batters going. It's 111 for the loss of 6. Zabin Irfan has been quite expensive. 34 he has conceded and still has 1 ball left. And next ball down the leg will have to re-bowl. It's a wide, and it takes the score to 112 for the loss of 6. Sheikh Bilal, Ramiz, Lun, and Butt Amir watching us from Butt Traders Marazigund. See the final ball coming up, and it is Ramiz Dada watching from Sephora, sending a love for the side of Sephora Cricket Club with the final ball of over number 13 coming. Again, Ishfaq solid in defense, right behind the line of the ball, and the bowler intercepts in his follow through. 13 overs gone, and it is 108 for the loss of 6. शुक्रिया फिरदौस आपका। तो 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजमूई स्कोर है
एमसीसी बहरामपुरा का इस इनॉग्रल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 6 विकेटों के नुकसान पर मोहसिन हसन ने 3 ओवर किए 35 रन दिए 3 ओवर्स में। रमीज लोन हमारे साथ सुखपुरा से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेख बिलाल भी जुड़े हैं और इनके साथ साथ बट आमिर भी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव नशरियात में। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद को खेल दिया है, उस और फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 107 हो चुका है, 109 हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। अगली गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब और वहां पर जो है गेंद को फील्ड किया गया। शॉट कवर से फील्डर आए, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 109 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का कुल मिलाकर जो है इस वक्त 14वां ओवर जारी है। अगली गेंद बैकफुट पर गेंद को खेला, मोहतात अंदाज से बैट और साथ मिलाते हुए बल्लेबाज इशफाक ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 16 गेंदों का सामना किया इशफाक ने और 14 रन बनाए, जबकि सज्जाद ने 6 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए। इरफान ओवर में अगली गेंद के साथ, गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद थोड़ी नीचे रहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। कुल मिलाकर 14वें ओवर का खेल जारी। स्कोर है 109 6 विकेटों के नुकसान पर एमसीसी बहरामपुरा का में पहले बल्लेबाजी करते हुए। इरफान ओवर में अगली गेंद के साथ, ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के एक मतबा फिर गेंद को खेल दिया ऑफ साइड की जानिब। फील्डर काफी पीछे खड़े हैं, 1 रन का इजाफा। स्कोर में इत्मीनान के साथ और चहलकदमी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने ये रन मुकम्मल किया। स्कोर बढ़ता हुआ 110 6 विकेटों के नुकसान पर। 14वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे इरफान, सामना करेंगे अब उनकी गेंद का बल्कि सज्जाद। ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता और नो बॉल का इशारा वहां पर आता हुआ, क्योंकि गेंद जो है गालिबन मैट जो है वहां पर पिच नहीं हुई थी, बल्कि मैट से बहुत ज्यादा बाहर और फ्री हिट होगी। अगली गेंद को खेल दिया है और गेंद सीधे 4 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री को छूती हुई। यह चौका आता हुआ और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 115 हो चुका है। 115 हो चुका है मजमूई स्कोर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल। एमसीसी बहरामपुरा का स्कोर है 115 6 विकेटों के नुकसान पर। इनॉग्रल मुकाबला इस वक्त जारी एमसीसी बहरामपुरा और सुखपुरा क्रिकेट क्लब के माबैन बाबागुंड के स्पोर्ट्स फील्ड पर गोनीपोरा प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मुकाबला। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। अगली गेंद और इस मतबा 15वें ओवर में बुलाया गया है ओवैस लोन को। ओवैस लोन है बॉलिंग मार्क पर, पारी का 15वां ओवर फेंक रहे हैं, इनफरादी तौर उनका 3रा ओवर। ओवैस बॉलिंग मार्क से एक मतबा फिर सामना करेंगे उनकी गेंद का इशफाक के लिए ओवर द विकेट। गेंद की बैकफुट पर गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला, उछाल लेती हुई गेंद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दायरे के अंदर। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। लोन फाजिल हमारे साथ जुड़े हैं, सुखपुरा क्रिकेट क्लब के लिए अपना प्यार भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोन फाजिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके, जो कि गोनीपोरा प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मुकाबला है। और अब ओवैस लोन की इस गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया गया। दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ इस दौरान रन मुकम्मल किया, तो मजीद 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 116। 15वें ओवर का खेल जारी। 116 हो चुका है स्कोर। अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है, रन बनाने का इस मरतबा कोई मौका नहीं। पीरजादा शकील बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनके साथ साथ
लोन फाजिल भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानवानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 15वें ओवर का खेल जारी है और मजमूई स्कोर है 117, 6 विकेटों के नुकसान पर। उवैस लोन इस मरतबा गेंद को खेल दिया है और ऑफ साइड की जानिब, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका। ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी तैनात किए, बल्कि 7 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं और ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी तैनात। 118, 6 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। उवैस लोन ओवर की आखिरी गेंद के साथ इस मरतबा गेंद को खेल दिया है, हवा में शॉट लेकिन महफूज, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज इशफाक सज्जाद के बल्ले से आता हुआ छक्का, और 6 रन के इजाफे के साथ ओवर मुकम्मल होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 124, 16 ओवर्स के इख्तिताम पर 124 हो चुका है मजमूई स्कोर। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 6 विकेटें इस दौरान गिर चुकी है एमसीसी बहरामपुरा की, बल्कि 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मैं माजरत चाहूंगा, शाहजेब मीर हमारे साथ बहरामपुरा से जुड़े हैं, जानवानी जुड़े हैं, पीरजादा शकील भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। BMZ ग्रुप सरकपुरा, रफियाबाद, मंसूर डेकोरेशन और अलमायदा बेकरी रोहामा की वसादत से ये लाइव कमेंट्री आप तक पहुंच रही है। पंद्रह ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब देखना होगा 16वें ओवर में किस बल्लेबाज को बुलाया, किस गेंदबाज को बुलाया गया है। 124 है स्कोर। सुहेल अब बशीर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। सुहेल बशीर 16वें ओवर की पहली गेंद, और इस मरतबा गेंद जो है बैकफुट पर खेलने की कोशिश, आखिरी लम्हात पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अगली गेंद छोटा सा रन अप सुहेल बशीर का, अंपायर को क्रॉस किया, लेग ब्रेक बॉलर है गालिबन, गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया थर्ड मैन की जानिब। मिस फील्डर गेंद के पीछे, देखना होगा गेंद को रोकने में क्या कामयाब होंगे। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जो है रोकने की कोशिश, और इस दौरान 2 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के इजाफे के साथ 126, 6 विकेटों के नुकसान पर। मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं बादमी बाग श्रीनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं शाहजेब मीर के साथ। अगली गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए फॉरवर्ड गए, जोरदार अपील, लेकिन नकारा इस अपील को। पैड से टकराई थी गेंद, काफी ज्यादा फॉरवर्ड गए थे गेंद को खेलने के लिए। आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे, कोई नुकसान नहीं, और यहां पर जो है अंपायर का सही फैसला कहा जाएगा। सोलहवें ओवर का खेल जारी है और बॉलिंग मार्क पर है सुहेल बशीर। अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया सुहेल बशीर ने। इस मरतबा गेंद को खेल दिया गया, बल्लेबाज ने गेंद को खेला, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ 127 स्कोर। सुहेल बशीर ने 3.5 ओवर्स में कुल मिलाकर जो है 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा, नफी तुली गेंदबाजी का मुजाहिरा, और अपना कोटा मुकम्मल करते हुए 19 रन दिए अपने कोटे के 4 ओवर्स में, और 2 विकेटें हासिल की सुहेल बशीर ने। 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 128, 6 विकेटों के नुकसान पर एमसीसी बहरामपुरा का पहले बल्लेबाजी करते हुए। सज्जाद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुर्तजा साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहा खान को बैटिंग के लिए आना चाहिए। तारिक अहमद भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव नशरियात में हमारा साथ निभाने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। अगली गेंद 17वें ओवर की पहली गेंद, और इस मरतबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाती हुई इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, देखना होगा उस ओर फील्डर तैनात, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोका गया है। इस दौरान दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, तो 2 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के इजाफे के साथ 131 हो चुका है
6 विकेटों के नुकसान पर। यावर तेली हमारे साथ जुड़े हैं मुर्तजा के साथ, सज्जाद अहमद भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 131 6 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर का खेल जारी। अगली गेंद उछाल लेती हुई गेंद, हालांकि विकेट पहले से ही छोड़ दी थी बल्लेबाज इशफाक ने, लेकिन गेंद जो है उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इशफाक ने 30 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए और सज्जाद ने 12 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए। अगली गेंद इशफाक अहमद की, गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, इशफाक अहमद ने रन बनाने का कोई मौका नहीं। 131 6 विकेटों के नुकसान पर। मंजूर लिख रहे हैं कि ग्राउंड कौन सा है, ये बाबा गुंड का स्पोर्ट्स फील्ड है, बाबा गुंड का स्पोर्ट्स फील्ड, बाबा गुंड रफियाबाद का, और गोनीपोरा प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मुकाबला। यावर तेली सोइन से हमारे साथ जुड़े हैं, सोइन रफिया बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव नशरियात में, लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। अगली गेंद हवा में खेला गया स्ट्रोक, एक टपा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाती हुई, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी गेंद तक पहुंचने की लेकिन पहुंच नहीं पाए और एक टपा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाती हुई 6 विकेटों के नुकसान पर। मजीद 3 ओवर्स का आना पहली पारी में बाकी है और क्या टारगेट यहां पे सेट होता है इस मामले में सेफोरा क्रिकेट क्लब के लिए। सेफोरा सेट होता है ये देखना होगा। और इशफाक अहमद जो है उन्होंने 4 दिए और कुल मिलाकर उनके खाते में 3 विकेटें गई है। जाना हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनॉग्रल मुकाबला है गोनीपोरा प्रीमियर लीग का। गेंद 17वें ओवर, ये 18वें ओवर की पहली गेंद, थर्ड मैन मौजूद 4 रन के लिए, तो 4 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन के इजाफे के साथ 136 हो चुका है। 136 चुका है मजमूई स्कोर। यहां देखना होगा कौन से गेंदबाज जो है बॉलिंग मार्क पर बुलाए गए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस मतबा स्टंप्स बिखेरी विकेट कीपर ने और इस तरह से ये 7वीं विकेट गिरती हुई। आपको थोड़ा सा जो है स्लो मोशन में दिखाना चाहेंगे किस तरह से विकेट कीपर ने विकेटें बिखेरी और इशफाक की इनिंग का खात्मा होता हुआ, जिन्होंने 27 रन बनाए 35 गेंदों का सामना करते हुए थोड़ा आगे गए थे और विकेट कीपर ने उन्हें वापस आने का कोई मौका नहीं दिया। अच्छी फुर्ती के साथ कहा जाएगा कि उन्होंने ये स्टंप्स बिखेरी। लोन फ्रूट एजेंसी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहरामपोरा का स्पोर्ट्स फील्ड है और गोनीपोरा प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मुकाबला। बट नजीर चतलोरा रफियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डेंगी वचा के हवाले से लिखा है कि मैदान में एक मैच खेले। लोन फ्रूट एजेंसी से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर बट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गालिबन ये विलेज लेवल का टूर्नामेंट है, ये लोन फ्रूट एजेंसी से मुनीर लोन हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो गालिबन ये विलेज लेवल टूर्नामेंट है और गोनीपोरा प्रीमियर लीग और स्पोर्ट्स फील्ड है बाबा गुंड रफियाबाद। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 18वें ओवर का खेल जारी। 136 स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी बहरामपुरा का और ताहा मीर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। टीम के कप्तान गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की जाने, फील्डर गेंद के बिल्कुल पीछे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ खाता खुलता हुआ ताहा मीर का, उन्होंने अपना खाता खोला और स्कोर बढ़ता हुआ 137, 7 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर का खेल जारी। जाना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये 20-20 ओवर्स का मैच है। अगली गेंद और इस मतबा बल्ले का अंदरूनी किनारा, फाइन लेग की जाने जाती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ ताहा, बल्कि ये सज्जाद के बल्ले से आता हुआ चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 141 हो चुका है। 141। सज्जाद एक मतबा फिर सामना करेंगे इरफान की गेंद का, गेंद के ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, शॉट कवर पर, रन बनाने का कोई मौका नहीं।
इरफान का ये ओवर जो है, इसमें हालांकि एक विकेट गिरी लेकिन 9 रन आए। और अब ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे, 141 स्कोर, सामना करेंगे इस आखिरी गेंद का सज्जाद। गेंद की एक मतलब फिर डॉट गेंद, ओवर मुकम्मल, 141, 7 विकेटों के नुकसान पर कुल मिलाकर जो है 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और मजीद 2 ओवर्स का आना बाकी। बट नज़ीर बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान बट सेतलोरा से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद अमीन बट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अमाला से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोन फ्रूट एजेंसी से हमारे साथ जुड़े हैं मुनीर लोन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। Thank you very much. 18 overs have been bowled and they have 141 on board for the loss of 7. With Muhammad Amin, Jana and Butt Nazir watching from Setlora. 2 more overs to go and Tahamir will look to make most use of the crease, which just arrived at the crease. And getting ready to face the first ball. Gets it high off the bat. It's in the air. Could be wicket here. Tries to go, but as I said, he just tries to make most use of those 11 left in the first innings. Now the first ball and doesn't get it from the meat of the. You can see the sun rays falling directly on the eyes of the fielder there. He just completes it nicely and gets rid of the captain, who walks back. And MCC Behrampora, I could say they're. The first wicket fell and they kept losing wickets, and I don't think this is going to be allowed to chase anything up to 170, and it's a long way to go for MCC. Ball again, this is in the air and well shot of the fielder who was charging in from mid wicket, but the batters steal a single there, and that single takes the and 42 for the loss of 8. Sephora Cricket Club, the bowlers, after being punished in the first couple of overs, this has been turned on, over long gone for a 6. Cut short, but next ball, get MCC Behrampora, and Sajjad is doing it nicely. Done it until now, and last 6 bowlers, he will be trying to face all those 6 delivery. Again tries to go for the big shot, doesn't connect at all, and it goes into the gloves of wicketkeeper. And there was a slight network issue, as has been a slight fluctuations. Just 4 more bowlers to go now. It is 156 for the loss of 9. And Rashid Nazir, Mir Bushra also watching and enjoying the game. A network problem giving a bit tough time as well, but we will try to sort it out. As MCC Behrampora are 156 for the loss of 9 wickets. The Waslun getting rid of the batter. He was trying to go for the big shot, just leaves the crease, and wicketkeeper has done the rest. He's done the job behind the stumps. But I could say, as Taha said, 150 will be a good score for us. We have a good bowling lineup. And they have definitely gone past the 150 mark. And after that, just 4 more bowlers to go with a final batting pair out there.
and we'll have to wait and watch. Can he send a couple of bowlers and couple of deliveries out of the park to carry his team up to 160, 170 with 4 bowlers to go? And we mostly you, but it has gone vice versa to MCC Behrampora well. And in those middle overs, a couple of wickets regularly has really pulled the chances of scoring 200 back. And with the first ball, drills it down to long on, get a single there, and it takes the score to 157 for 9. As it was the middle phase, it was a complete heyday for Sephora Cricket Club, as they kept picking up wickets and restricted the scoring chances as well. And now just 3 more bowlers left in the first innings. And this has been cleaned up. And MCC Behrampora. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to the run chase of Sephora Cricket Club. As the run chase begins here at Babagun Sports Field, strike the 2 openers for Sephora Cricket Club, and we're all set to go. Remember, they are chasing the score of 158 runs in their allotted 20 overs to win the inaugural game and to advance into the next round. The side of MCC Behrampora got bundled out on 157, and the target for Sephora Cricket Club now is 158. So all set to go with the chase. We'll have to wait and watch who are the 2 big time openers of Sephora Cricket Club and from the side of MCC Behrampora. All I can clearly have those visuals. The bowler is just warming up there. And it is Aqib Nabi and Ismail Lun just got the proceedings. Farhan has caught the ball in hand, and play is the signal. Here we go with the first ball of the chase from the far end. Farhan goes with the first ball, and he bowls that one down the leg side, starts with a gentle loosener, and it will be a wide. So often running, the scoreboard gets ticking along. Sephora Cricket Club, they have the first runs on the board. It is 1 without loss. Farhan starting with a loosener. Farhan starting with a wide down the leg side, and a single off the mark. Sephora Cricket Club, 148 is the target in front of them. Mid on inside the ring, scare leg out, and fine leg as well. Next ball, and cuts the batter into half, gets the inside edge. Wicketkeeper had no chance at all, and will trickle away, run down to the fine leg fence for 4. First runs on the board, but not a convincing way to get off the mark, not a confident way to get off the mark. He was caught in a tangle there, just rooted to the crease, no footwork at all, and gets a big inside edge. And it could sometimes easily chop back onto the stumps. But this time luck favours the batter, and it runs away down to the fence for 4. Farhan with the next ball, down comes the batter, smashes him away, and over scare leg boundary for a 6. All I call it, hits the jackpot this time. Down the track he goes, takes the ball on the full, and goes leg side, goes beautifully, and goes for half a dozen. Starts with a 6, it's 11 without loss. And Aqib Nabi just pouncing on the chance created there, and he gets a 6. Farhan once again, and Aqib was just trying to take the bowler on, just trying to bat with a great intent and put the bowler off his length, off his radar. And this time no connection with the bat and all, and it goes into the gloves of wicketkeeper Bilal Ahmed is watching from Ahmedabad, and we have got Suhail Majid watching from Setlura Rafiabad. Thank you very much, Suhail, for joining us in over number 1. It's 11 without loss. Next ball, a bit of pace and bounce on offer as the batter watches the ball till the last moment and rides the bounce well, taps it on the offside but cannot build the fielder, though he's inside the ring, and a number of fielders on the offside
trying to save the single. Third man is out, so you need to bowl according to your field. Hit the right spots on the wicket and don't let the batter to score freely. Gentle appeal of LBW as the batter was just trying to play the ball off the back foot, just trying to work it off the back foot, and doesn't get any contact at all, and trickles back along the track straight back to the bowler. There is no run at all, and we're still in over number 1, and they have scored 11 runs on board without losing a wicket. Aqib Nabi getting a 4 and a 6, and now gets completely and comprehensively beaten on the final ball. And Zubair is mentioning the score of MCC Behrampora looks below par here. And I could tell you during the toss, Taha said that we will look to go up to 160, have a good bowling lineup, have a depth in the bowling, so we will try to defend the score. But comparing the side of Sephora Cricket Club, the captain said we will try hard to chase down. 170 will be the target. We will look to chase quite easily. And at this stage, 157 looks a below par. There is no doubt about that. They could have tried to go up to 160, and Zubair, I could tell you, they got a good start with the openers scoring 65 runs inside 5 overs. But after that, the batters completely failed. The fresh over begins, and there was a bit fuller delivery onto that middle and leg stump area, and tries to work the ball on the onside, and doesn't get it off the bat, rolls down to cover, and there is no addition to the total. No chance of a run at all, as the score is still 11 without loss. Azad Ghulam, he's watching from Mandigam, and Abu Zaid, it is here at Babagun Sports Field. A full toss lofted over the bowler's head, and gone for a 6. It's a gentle loosener bowling a full toss delivery, and this has been smoked away over the bowler's head, and it carries all the way for a 6. Furkan Johnson bowling from the combox, and he bowled the first ball and pitching it further up to the batter, but this time concedes a full toss, and the batter takes full toll of it. He makes full use of the ball and gets himself a much needed 6 to get off the mark, and takes the score to 17 without loss. In the meantime, next ball onto the pads again, and it doesn't time it well, and they will get a single. There was an inside edge, overthrows, and it has costed them one more extra run, and it takes the score to 19 without loss. Shafkat Butt is watching the game, is just enjoying the game. Thank you very much, Shafkat, for your love and support. Abu Zaid, I guess it is working fine, but we have just limited it to 720 pixels only, because there are weak networks. It's a weak network zone, and there was continuously a network issue in the first innings, but now I guess it is working fine, as I can check on my mobile screen. But I guess the quality has been lowered down in terms of the pixels. You're just watching it on 720 pixels, and in the meantime wide goes down to the fine leg boundary for 4, conceding runs thick and fast, MCC Behrampora, and they need to understand the fact that they don't have that above par score on board where you can give your bowlers a chance. They can afford to bowl those wides, they can afford to leak some runs, but at this stage you just have 150 on board, and you need to be extra cautious when you got the ball in hand, and every run counts here. Every run is very crucial, every run is very judicious. And next ball, that is a better line from Furkan, and a pair of short delivery. The batter watches it till the last moment, till the 11th hour, and lets it pass through to the wicketkeeper, and there is no run at all. 24 it is. We are in over number 2, and Zayan Bhatt, walaikum salam brother, we request you to share the live broadcast, engage other cricket lovers and sports lovers to the game. Once again a wicketkeeper fumbles, and it allows the batters to cross for a single. May I remind you, as a unit, you just need to regroup, and mostly in the fielding side, in the fielding department,
You need to be extra cautious. You need to work extra. You need to go extra mile, because you need to save those runs in the field, at least 10-20 runs. If you could do a bit extra things there, and you could really put pressure on the batters. If you could limit the run scoring chances, if you could limit the scoring opportunities of the batters, and you can see the bowlers leaking runs, 24 after 2 overs. Mehraj Wani, he just mentioning MCC Behrampora, they got a bit inexperienced at bowling side, and Adil Yusuf Lun Fazil sending in love for Akib Lun, and he has started really well. Zayan, but thank you very much, brother. 29 it is, starts with a boundary off the very first ball, and Abu Zaid, thank you very much. The outfield here is lightning fast, even though there isn't much covering of grass on the outfield, and it really makes that outfield lightning fast. And in the meantime, Farhan goes again, nicely works it on the onside, and a fumble there. You cannot afford these easy runs. That was a very simple chance there. He just needed to stop the ball. The ball was just slowly coming towards the fielder. I guess it was Shizan there who makes a mess and lets the batters to cross for a single. I told you earlier, you don't have enough runs on board, and you just need to work hard. You just need to toil, make those batters toil hard for those runs. But at this stage, you're just leaking those runs. You're just giving those freebies to the batters, and they're just loving it out there. 30 without loss, and Farhan is his second over, has conceded 16, and Adil Yusuf, they have their own broadcasters there, I guess JK Sports 24, and today it will be Rail Good who will be broadcasting live, and then it will be Sultan Warriors will be broadcasting the game live. We don't have the broadcasting rights there, as we do have our own busy schedule on Global News Network and rest of the places in North Kashmir as well, if you talk about Sopur and in our own areas. So hope you could understand. In the meantime, next ball guides that one nicely, but finds the fielder, cannot beat the fielder though, and it goes straight to the fielder. An excellent comeback after conceding a boundary. 30 without loss, and a good start for Sephora Cricket Club, chasing down the score of 157. They have got off to a good start. The batters, especially Akib Lun, has looked good until now. Now down the track he goes again, but he doesn't connect at all. The ball goes into the gloves of wicketkeeper at this stage. It's Azan going on their reverse and taking my microphones down for a while. And after the Azan time, Mendes will definitely be back in a short while. So the last ball has yielded 4 runs because of the overthrows, and I could seriously tell you MCC Behrampora, the fielders are not learning the lessons in the field.
And if you could leak runs like the way you're leaking, it will be really tough for the bowlers to stop. You cannot save your skins then. And at this stage, that was a very simple fielding chance for the fielder as he picks the ball, hammers a needless throw at the stumps. And I guess two wicketkeeper and the fielder was backing as well, but they failed to stop the ball. And Mehraj Wani absolutely poor fielding, and I simply can say seriously they're not looking serious in the field. I have seen until now at least 2 or 3 misfielders done by the side, and you cannot save the bowlers. It creates a lot of pressure on the bowlers when a fielder doesn't provide you that support, when a fielder doesn't support, when your fielders doesn't support you. And nothing the bowler could do about this. 4 free runs costed in the final ball. And Adil Yusuf, thank you very much for understanding. Hilal Ahmed, walaikum salam, watching from Panzla. Is wearing number 4 of the chase. 35 runs on board. Good start, a solid start for Sephora Cricket Club. And once again punches that one away. But cannot beat the fielder who is inside the ring. Just need to find those gaps as well. No matter how good a shot you play, how stylish, how better a shot you'll play. But it always has that importance when you find the gap, when you pierce those fielders, and it could fetch you some runs. And next ball onto the pads and will scamper for a leg by. A single takes the score to 36 without loss. And let's remind you once again, the inaugural game of Gonipora Premier League being played at this good, beautiful sports field of Babagund. In the inaugural game, MCC Behrampora are fighting it out against Sephora Cricket Club. They batted first to MCC and have 157 runs in the bank. And again, a misfield there. It will go down to the third man fence for 4. And you could see a weary smile on the bowler's face. And the fielders completely looking out of touch here. And the captain Tahir Mir is just biting the nails. What is happening in the middle with the fielders of MCC Behrampora? And there hasn't been a professionalism in the field. There hasn't been that athleticism in the field. A misfield once again, and it runs down to the boundary for 4. I guess out of those 40 runs, at least 20 runs have been scored because of the misfielding. And once again an inside edge, it trickles down to the fine leg boundary for 4. Runs are coming thick and fast, and it is giving a tough time to the MCC skipper, and he's just biting the nails. He's not believing what is going on into the field. The bowlers leaking runs, the fielders not being able to field properly, not being able to stop the run flow. Runs coming thick and fast. In just over number 4, Sephora Cricket Club have started very strong with 44 runs on board. And Aqib Nabi faces the next ball, guides that one away. But now they have that third man outside the 30-yard circle, and will get a single. I could tell you that had the fielders been agile, had the fielders been electric in the field, they might have saved 13 or 15 runs, which they have given additionally. After 4 overs, it's 45 without loss. A solid start for Sephora Cricket Club, but you'll have to blame the fielders until now. They have looked idle, they have looked lazy and tame in the field. And the captain, you just need to have a couple of words with your fielders. Just regroup the team, have a conference out there, and just infuse that confidence into the fielding side. Infuse that confidence. As a leader, you need to have a chat with your players. As a leader, you just need to bring that energy in the field. But the side of MCC Behrampora, they have looked really out of the touch. The bowlers haven't been up to the mark, and the fielders looked off color. As I said, the fielder at backward point missing that chance and lets the ball to go through the legs for 4. And then in the previous over, to be precise, that was the final ball which costed them an overthrows at a boundary. And on that mid-on region where it could have been a dot ball, he leaked 2 more runs. So count at least 15 or 16 runs have been given additionally.
and a bowling change, and it has forced the captain of MCC Behrampora to go for the change. It will be Sajjad to continue. And Yawar Muhammad, walaikum salam brother. And Mehraj Wani is mentioning Sajjad should bowl now, and the captain has gone to Sajjad. We'll have to wait and watch what Sajjad can do. And he starts with a good delivery. And beats the batter and has gone into the gloves of wicketkeeper Mehraj Wani and Jamil Ahmed. Thank you very much. Wishing you all the best for your own match. This is high up in the air. Will it go all the way for 6? And how to wait and watch. Yes, it is. Taking on Sajjad as well. Just taking a couple of steps down the wicket. Takes the ball on the full, and it has gone over the ropes for half a dozen. 6 more takes the score to 51. And nothing going good for MCC Behrampora. Nothing is working well for them. And we're in over number 5, 51 already on board. Sephora Cricket Club bossing the game. This one has been smashed. Absolutely smashed, and one bounce into the square leg boundary for 4. Sajjad having no answers. Nothing wrong with the ball, but this was all class of the batter. Just rocks back and absolutely pummels the ball. Just walters the ball. And it goes one bounce and into the fence for 4. Jamil, you have your own match, and he's mentioning we have got a biggest rivalry of Kandy area. Kandy Sultan is facing on 11 star Kandy. And Yawar, the target is 158. Sajjad Sheikh. In the meantime, a 55 run stand for the first wicket, doing wonders, doing a great job for Sephora Cricket Club. The final, we still have a ball to go in this 5th over. Sajjad has already conceded 10, and next ball goes aerial, goes over 3rd man, as the deep point fielder has to do a lot of work. He tidies things up, and in the meantime the batters easily cross for a single, going more than 11 runs per over. They just need 102 runs to win off 91 bowlers. It has been an excellent start. What a start this is for Sephora Cricket Club. They're replicating the same performance which was done by the openers of MCC Behrampora. They got off to a good start. Remember, for the first wicket, the openers put on 65 runs. But after that, they completely lost the plot. They completely lost their way. And they kept losing wickets, but all I said in the first innings, the side Sephora Cricket Club, the bowlers just holded their horses, and they just waited for those good times. All I can say, they just waited for their chances, and the bowlers, the batters were absolutely facing the heat in the middle overs. A mini collapse completely folded things back for them, and they restricted the side to 157. Now chasing 158, they have 56 on board without losing a wicket. शुक्रिया फिरदौस आपका। तो यहाँ पर जो है मजमूई स्कोर है 56, बिना किसी नुकसान के बेहतरीन आगाज फराम होता हुआ। ताहिर मीर है बॉलिंग मार्क पर। 6ठे ओवर की पहली गेंद को खेला पॉइंट पर, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आकिब नबी और इस्माइल लोन जो है, इन्होंने इस पारी का आगाज किया सेफपोरा क्रिकेट क्लब के लिए, और बेहतरीन आगाज फराम होता हुआ सेफपोरा क्रिकेट क्लब के लिए। ताहा मीर ओवर में अगली गेंद के साथ 6ठे ओवर का खेल जारी है। ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट छोड़कर गेंद को जारहाना अंदाज से खेला, फील्डर गेंद के नीचे, और कैच ड्रॉप होता हुआ। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच जो है यहां ड्रॉप होता हुआ, और मौका मिला था पहली विकेट जो है यहां पे हासिल करने का, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के हाथ से कैच छूट गया। अगली गेंद ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, वहां पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। कुल मिलाकर मजमूई स्कोर है 57 बिना किसी नुकसान के। 7वें ओवर का खेल जारी। ताहा मीर ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट,
गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेलने की कोशिश, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग की जानिब और वहां फील्डर तैनात नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। मीर तैमूर हमारे साथ जुड़े हैं, यावर मोहम्मद, सज्जाद शेख हमारे साथ जुड़े हैं, जमील अहमद के साथ आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहतरीन आगाज जो है यहाँ पे फराम होता हुआ सेफोरा क्रिकेट क्लब के लिए, और सेफोरा क्रिकेट क्लब की जानिब से इस्माइल लोन और आकिब नबी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस्माइल लोन के लिए इस मरतबा गेंद को खेला और उस ओर कोई फील्डर तैनात नहीं, तमाम खिलाड़ी जो ऑन साइड पर है वो दायरे के अंदर, और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ इस्माइल के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 65 बिना किसी नुकसान के। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का आखिरी ओवर जारी है। 158 रन का हदफ मिला है मुकाबला जीतने के लिए, और जिस आगाज की उम्मीद की थी यहां कप्तान ने, वो आगाज फराम होता हुआ इस्माइल और आकिब नबी के जरिए। ताहा ओवर में आखिरी गेंद के साथ गेंद को खेला, बैट और पैड साथ मिलाते हुए, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ताहा का ओवर मुकम्मल, पहला ओवर उनका 9 रन आए उस ओवर से, 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 65 स्कोर बिना किसी नुकसान के। मीर तैमूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं इस लाइव नशरियात में, लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये बाबा गुंड स्पोर्ट्स फील्ड है और गोनीपोरा प्रीमियर लीग का इनॉग्रल मुकाबला एमसीसी बहरामपुरा और सेफोरा क्रिकेट क्लब के दरमियान इस वक्त जारी। सेफोरा क्रिकेट क्लब को मुकर्ररा 20 ओवर्स में 158 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और एक अच्छा आगाज उन्हें फराम होता हुआ तो यहां 65 स्कोर बिना किसी नुकसान के। देखना होगा ताहा मीर के बाद किस गेंदबाज को बुलाया गया है बॉलिंग मार्क पर। कुल मिलाकर 65 स्कोर और 93 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि 84 गेंदों का खेल बाकी है। इस्माइल लोन जो है उन्होंने 35, आकिब नबी ने 35 रन बनाए 22 गेंदों का सामना करते हुए, इस्माइल लोन ने 19 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए। 7वें ओवर का आगाज होता हुआ सज्जाद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे आकिब नबी। आकिब नबी के लिए गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए और विंस इस मरतबा विकेट कवर करके गेंद को खेला स्क्वायर की जानिब और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। यह चौका आता हुआ आकिब नबी के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 69 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। राशिद नजीर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आरजे अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। टारगेट 158 रन का है, 69 मजमूई स्कोर, 7वें ओवर का खेल जारी, और सबसे अहम बात यह कि अभी तक कोई विकेट नहीं गई है सेफोरा क्रिकेट क्लब की। सज्जाद अगली गेंद के साथ इस मरतबा बैक फुट पर गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ और खेलते दौड़ पड़े, रन मुकम्मल होता हुआ। देखा फील्डर काफी पीछे खड़े हैं, दोनों बल्लेबाजों ने जो है यहां पे रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। और अब इस्माइल लोन सामना करेंगे सज्जाद की गेंद का। यह 7वें ओवर का खेल जारी है। सज्जाद इस्माइल लोन के लिए छोटे से रनअप के साथ बैक फुट पर बैट और पैड साथ मिला तो एक मतलब फिर रन के लिए दौड़ पड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71। बेहतरीन तालमेल के साथ यहां रन्स जो है हासिल कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। के सज्जू हमारे साथ जुड़े हैं, आरजे अल्ताफ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और सज्जाद एक मतलब फिर आकिब नबी के लिए ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, बैक फुट पर ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, लेकिन फील्डर उस ओवर काफी पीछे खड़े। एक देखना होगा 1 रन का इजाफा स्कोर में, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 72
बिना किसी नुकसान के 7वें ओवर का खेल जारी। आरजे अभी बल्कि ये सज्जाद है बॉलिंग मार्क पर, बैकफुट पर आके नबी ने गेंद को खेला और रन बनाने का कोई मौका नहीं, बल्कि इस्माइल थे वहां पर। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 72 स्कोर बिना किसी नुकसान के सजू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। After the completion of 7 overs, going at more than 10 runs per over, it is 72 without loss. At MCC Behrampora, they'll have to blame themselves as the fielders completely failed as a unit, and nothing a bowler could do about that. Couple of misfielders, and he could see Tahamir, the captain of his bowling, the catch went down at long gone. A fine chase going on for Sephora Cricket Club. 72 they are without losing a wicket. As Tahamir continues, he has conceded 9 in the first as he goes again. A slower delivery. This has been driven nicely all along the carpet down to long off, and will get a single. And now he could easily do the job with those singles as he has completely grasped the game. You're completely in control of the game at this stage. And without losing a wicket, this has been the plus point. This is the plus point for you. And need to bat sensibly well now. And this one guides it down to short third man. The fielder is inside the ring. There is no chance of a single. Denies them 73. We are in over number 8. Chasing 158 as we told you at the start of the innings. As a fielder, you just need to support your bowlers. We've seen numerous misfielders from MCC Behrampora. And a catch at long on which should have been taken. In the meantime, he goes onside in the gap, and we'll have to wait for the signal. Now 4 signal there. Problems continue for Tahamir and MCC Behrampora as runs are coming thick and fast with 77 runs on board. They just need 81 to win from here on. And Sephora Cricket Club are completely bossing the game. This has been a great chase. This has been a befitting reply to the chase. And in the meantime, Tahamir goes once again. And on the off-stump line, just pushes it straight to cover. There is no chance of a run. Eight overs have been bowled, and Sephora Cricket Club are giving a terrific reply to the chase of 158 runs. They're 77. But the thing which is in their favour, haven't lost a wicket yet. Both the strike batters padding out there with ease, with positive intent. Especially we've seen Akib Nabi damaging at the top of the order, doing a real damage on 42 of 28. And Ismail has given the company and a perfect combination of power hitting and relentless batting on 24 of 21. And this duo of Sephora Cricket Club giving tough times to MCC Behrampora, they desperately need a wicket here. They desperately want to break this stand for the opening wicket. And he's going to be the man who could do the job. But the fielders need to be electric and agile as cat in the field. And MCC Behrampora at this stage are lagging behind, definitely lagging behind. There is no doubt about that. And you can see first ball of the fresh over starts with a wide and a bye as well. And we'll get a single. 2 more runs added to the score takes them to 79. And looks like an inexperienced side, inexperienced bowling lineup of MCC Behrampora, completely looking off color, leaking runs. And this one nicely places it away in the gap and down to the third man fence for 4.
You can see everything the batters are turning, everything they are touching, it turns out to be a golden dust. And this is a fantastic start. A worrying sign is for MCC Behrampora as they failed to pick up wickets, and moreover the bowlers are just leaking runs once again. Strangles the ball down the leg side. One more run added to the score. It's 84 without loss for a first wicket. Both the batters have done the damage at the top of the order, and Shizan Mir once again fails to find that right spot on the turf, fails to find that right place where he needs to bowl. Bowls couple of wides and clean bowls in this time. After a series of wides, he is able to find the timber. Completely castless the batter there. He was trying to go for the slog on the onside, misses it, and it cannons onto the stumps, crashes onto the stumps. And finally, after a long time, I could say there is a wicket for MCC Behrampora. Or I could definitely tell you these two batters have done a great job at the top of the order, stitching 85 runs for the first wicket. First one goes down as Ismail walks back to the pavilion on 28 after 6.2 overs. It's 85 for the loss of 1. Just 73 runs away to register a victory, MCC Behrampora. And now they got a conference at the centre. What needs to be done from here on? You got a first wicket, and now you'll have to toil hard. You just need to focus on picking more wickets. You need to focus on restricting the batters from scoring free, like it has been done by them until now. They've been absolutely ruthless with the bat, and the bowlers have surely taken the punishment today and completely leaked runs at the top of the order. And there have been a couple of wickets in the first couple of overs, especially in the power play. This could have been a different whole scenario of the game. But it hasn't gone right for them. It hasn't worked well for them. As for the first wicket, Sephora Cricket Club have got off to a great start. They got themselves a terrific start first up. 85 runs on board for the loss of 1. Bashir Ahmed War, thank you very much, Mohammad Akbar and Amir watching us from his shop, Amir Hardware Rahama. First ball to the new batter and bowls it down the leg side. Easy pickings. We call it's a piece of cake for the batter. He just turns it round the corner and finds the gap down to the fine leg boundary for 4. A gentle loosener to start for the new batter. As I said, you have got a wicket, but you just need to tighten the grip to the new batters. Giving easy runs with the first ball, starting a terrible down the leg side delivery, and all the batter just needed to tickle that one fine as he finds the gap and gets a boundary. Takes them to 90 for 1 as Shizan goes once again, and look, he's completely struggling there. He has just bowled 4 legitimate bowlers, but I can count. He has bowled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balls until now. And next ball just drills him down the ground, down to long on. All along the ground, and both the batters will get a single. 92 it is. 92 for 1. And Shizan goes again. Invites the batter to go for the drive. Goes for the booming drive, but doesn't connect. And there is no connection with the ball at all as it goes into the gloves of wicketkeeper. 92 for 1. A fantastic and a fantabulous start for Sephora Cricket Club coming into the chase of 158 runs. They got off to a flyer, they got off to a vociferous start, and the batters completely being heavy on the bowlers of Royal Youth Behrampora. And they were not able to pick wickets in the power play, nor in the middle phase. Now just 1 wicket has fallen, but both the batters have done their job nicely. Both the batters have done it so well, and absolutely have got themselves in a commanding position and making a statement. As I said, it has been a real heyday for them until now. The first ball of the fresh over, a gentle tap on the offside, and doesn't get a single, no run at all. We're in over number
10, so it's the final. We're at the halfway stage. 92 already on board. Next ball, tries to drive it on the up. This time no connection once again. Back-to-back dot ballers, and that is what you need to do here. Dots will do it nicely for you, although they need 66 runs to win of 64 ballers. And everyone knows with 9 wickets in hand, the batting side is at the good position. But a couple of wickets will mean the game will tilt in favour of MCC Behrampora. And chips it back to the bowler, and gone this time. Aqib Nabi walks back and pushes it quicker through the air, and the batter was way too early to the shot, and he offers a very simple catch. Arshad Yusuf takes it easily and calmly in his follow through, and I was telling you, couple of wickets here will tilt the game in favour of MCC Behrampora, and they're doing it nicely now. He got the first wicket, one brings another, and here is Aqib Nabi, who played a fine, a handy knock of 43 runs. Walks back to the pavilion. 2 dot balls and a wicket here. 92 for the loss of 2. By picking up wickets, you mean that he will be striking back into this game. By picking wickets regularly, it completely means that the batters will be pushed at the back foot, and you give yourselves a chance to come back in the game. The doors are always wide open. You never know in cricket. You expect those unexpected things. You expect those new things in the cricket. And I could tell you that the doors are always wide open for you till the last ball. And next ball, wide outside off stump. The new batter is Musab. He just leaves the ball to the wicket keeper. 4 dot balls on the trot. And this is turning it for MCC Behrampora. Arshad goes for the penultimate time to Musab. Short ball down the leg side, pulls it away in style, gets the boundary and gets off the mark. He was bowling so well onto that off-stump line, onto that corridor of uncertainty, but now changes his mind, changes his line and length, bowls a half-tracker down the leg side, and easy pickings for the batter. He picks the boundary, takes the score to 96 for 2. So 61 balls, and they need 62 runs to win. Next ball, driven on the up, down to long on, and a fumble there by the fielder, a misfield there, once again happening in the field, and it goes down to the boundary for 4. Where it could have been just a single, they have conceded a boundary. It's 100 for the loss of 2 after 10 overs. शुक्रिया फिरदौस आपका। नदीम गुल हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ साथ आमिर हार्डवेयर रोहाना से हमारे साथ जुड़े हैं। कुल मिलाकर 100 रन बोर्ड पर है, और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 58, गेंदें बाकी है 60। सेफपोरा क्रिकेट क्लब को और भट्ट आकिब और उनके साथ साथ मुसैब इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। भट्ट आकिब जो है सामना करेंगे सज्जाद की गेंद का। छोटा सा रन अप, गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद को खेल दिया है। फील्डर गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। रशीद नज़ीर हमारे साथ जुड़े हैं और बहरामपुरा के हवाले से लिख रहे हैं पोर क्रिकेट। जी बिल्कुल, और अभी तक कहा जाएगा कि गेंदबाजी उस तरह की नहीं हुई जिस, और मेरे साथी जो लगातार इस मैच में कमेंट्री कर रहे थे वो भी बता रहे हैं कि फील्डिंग भी कुछ अच्छी नहीं रही एमसीसी बहरामपुरा की। एमसीसी बहरामपुरा को जो है यहाँ विकेट दरकार, और सेफोरा क्रिकेट क्लब को सिर्फ 53 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 57 गेंदों का खेल बाकी है। सज्जाद की ये गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए ऑन साइड की तरफ, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर
इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। 106 52 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए सेफपोरा क्रिकेट क्लब को। ये इनॉग्रल मुकाबला बाबा गुंज स्पोर्ट्स फील्ड पर गोनीपोरा क्रिकेट ट्रॉफी का। अगली गेंद सज्जाद की, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला बट आकिब ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। पीरजादा उमर बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद नजीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद को खेल दिया है और फील्डर गेंद के पीछे लॉन्ग ऑफ से गए। जब तक गेंद को फीड किया जाता, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 107 हो चुका है और 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल। आसिफ राजा हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में जो है आप दाखला ले सकते हैं, एंट्री हासिल कर सकते हैं। ज़रा देर बाद हम आपको ऑर्गेनाइज़र का नंबर भी आप तक पहुंचाएंगे। साकिब नज़ीर जो है वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सेफपोरा क्रिकेट क्लब का स्कोर 157, 51 रन चाहिए, 54 गेंदों का खेल बाकी। 51 रन चाहिए, 54 गेंदों का खेल बाकी है। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये इनॉग्रल मुकाबला और कुछ दोस्त जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र के हवाले से लिख रहे हैं कि क्या इस टूर्नामेंट में हमें दाखला मिलेगा। तो आपको जो है ज़रूर दाखला मिलेगा। आपको ऑर्गेनाइज़र का नंबर आप तक पहुँचाना चाहेंगे, आप नोट करें 7889647205। एक मतलब फिर दोहराना चाहूँगा 7889647205। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके दाखला हासिल कर सकते हैं। मीर पावर टेलर्स ये हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शेख आकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीर मन्नान हमारे साथ जतन रफ़ीआबाद से जुड़े हैं। आसिफ राजा और एजाज परे मेरे होम टाउन से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव नशरियात में, लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए लाइव नशरियात में हमारे साथ, और लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया। और पानी का वक्फा जो है वो यहाँ पे जारी है और अब पानी का वक्फा मुकम्मल होता हुआ खेल जो है दोबारा से शुरू होता हुआ। मीर मन्नान वाचिंग फ्रॉम जतन रफ़ीआबाद, बहुत बहुत शुक्रिया मीर मन्नान जुड़ने के लिए। मंसूर डेकोरेशन सोइन रफ़ीआबाद और BMZ ग्रुप्स तरकपुरा रफ़ीआबाद, अलमायदा बेकरी रोहामा, इनकी वसादत से ये रनिंग कमेंट्री आप तक पहुंच रही है। मंसूर डेकोरेशन, अलमायदा और BMZ ग्रुप्स तरकपुरा रफ़ीआबाद। पीरजादा उमर हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो क्वालिटी के हवाले से लिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के हवाले से आप हमें जानकारी दे रहे हैं। पीरजादा उमर आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में तहरीर कीजिएगा कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव नशरियात को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। फेसबुक पर JK स्पोर्ट्स डिस्कवरी और यूट्यूब पर, बल्कि फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब पर JK स्पोर्ट्स डिस्कवरी। पानी का वक्फा जारी है और तमाम खिलाड़ी जो है वो इस वक्त पानी पीने में मसरूफ़ है। पीरजादा उमर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमें ज़रूर जो है आप जानकारी दीजिएगा कि आप तक हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। पानी का वक्फा मुकम्मल होता हुआ अब दोबारा से जो है खेल शुरू होगा और देखते हैं कि कितने रन, कितनी गेंदों पर ये जो बकिया रन्स है वो हासिल करती है सेफपोरा टीम के ये खिलाड़ी मुसैब और बटाकिब। मुसैब ने 9 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। बटाकिब ने 11 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए आकिब नबी।
43 रन की पारी खेली। आकिब नबी ने सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, आकिब नबी और इस्माइल, और दोनों ने कहा जाएगा कि एक अच्छा बेहतरीन आगाज जो है फराहम किया सेफोरा क्रिकेट क्लब को। और यहाँ वक्त काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं फील्डिंग साइड के कप्तान ताहामीर। फुरकान को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। फुरकान जो है वो अपना गालिबन तीसरा ओवर फेंकेंगे। पीरज़ादा उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीरज़ादा उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। और फुरकान हमारे साथ, फुरकान जो है गेंदबाज है और पारी का 12वां ओवर फेंकेंगे, सामना करेंगे उनकी गेंद का बट आकिब। रन्स दरकार 51, 54 गेंदों का खेल बाकी। फुरकान जॉनसन, फुरकान जो है वो बॉलिंग मार्क पर, लंबा बॉलिंग रनअप, 16 या 17 कदमों का रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की बैकफुट पर जोरदार अपील और आउट। कॉट बिहाइंड हुए हैं यहां पर बट आकिब। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये आउट हुए। और तीसरी विकेट गिरती हुई 107 के स्कोर पर सेफोरा क्रिकेट क्लब की। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेलना चाहता, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस तरह से ये विकेट गिरती हुई तीसरी विकेट गिरी है सेफोरा क्रिकेट क्लब की बट आकिब के रूप में। 107 के स्कोर पर यह तीसरी विकेट गिरी। आकिब ने 8 गेंदों का सामना किया और 11 रन्स बनाए। फुरकान बॉलिंग मार्क पर है और 107 है मजमूई स्कोर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। फुरकान जॉनसन बॉलिंग मार्क पर, इससे पहले 2 ओवर किए और 30 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की फुरकान ने। नए बल्लेबाज देखना होगा कौन से आए हैं सेफोरा की जानिब से, और साथ निभाएंगे मुसैब का साथ निभाएंगे, सामना करेंगे फुरकान की गेंद का। ये कुल मिलाकर 12वें ओवर का खेल जारी है। 107 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद फुरकान की नए बल्लेबाज वसीम नबी के लिए। गेंद को खेल दिया बैक फुट पर, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। फुरकान वसीम नबी के लिए एक मतबा फिर बॉलिंग मार्क पर, लंबा बॉलिंग रन अप फुरकान का। पहली गेंद पर, इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी। और अब अगली गेंद के साथ गेंद की नए बल्लेबाज के लिए। गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहा था, गेंद गालिबन थाई को छू गई और खुद ही आए गेंदबाज, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एमसीसी बहरामपुरा को विकेट दरकार मुकाबला जीतने के लिए, जबकि सेफोरा क्रिकेट क्लब को अभी सिर्फ 51 रन दरकार, जबकि कुल मिलाकर जो है 51 गेंदों का खेल बाकी। 51 गेंदे 51 रन। ऑप्शन से बाहर और बल्ले का ऊपरी किनारा, बाहरी किनारा, थर्ड मैन मौजूद लेकिन थोड़ा वाइड थे और इस तरह से गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ बल्लेबाज वसीम नबी के बल्ले से, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 111। यहां से रन दरकार 47 मुकाबला जीतने के लिए, और कुल मिलाकर 50 गेंदों का खेल बाकी। 50 गेंदे, रन दरकार 47 मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद एक मतबा फिर, और एक मतबा फिर बिल्कुल उसी अंदाज से गेंद 4 रन के लिए थर्ड मैन बाउंड्री को छूती हुई। तो 4 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 115 हो चुका है। 115, 3 विकेटों के नुकसान पर रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 43 और 49 गेंदों का खेल बाकी।
फुरकान, अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 115 है स्कोर और 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 115 है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 43 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 48 गेंदों का खेल बाकी है। 48 गेंदें, 43 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। सेफोरा क्रिकेट क्लब को यह इनॉग्रल मुकाबला गोनीपोरा प्रीमियर लीग का बाबागुंड के स्पोर्ट्स फील्ड पर। फुरकान का ओवर मुकम्मल, 3 ओवर किए, 28 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, बल्कि जी हां 1 विकेट हासिल की। ताहा है बॉलिंग मार्क पर। ताहा पारी का 13वां ओवर फेंकेंगे, इनफरादी तौर उनका तीसरा। गेंद को खेलना चाहता जा रहा ना अंदाज से, लेकिन बिना किसी फुटवर्क के, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 47 गेंदें, 43 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए सेफोरा क्रिकेट क्लब को। और यहां कहा जाएगा कि सेफोरा क्रिकेट क्लब की टीम जो है इस मुकाबले में हावी है, अगर वो विकेटें बचाने में कामयाब हो जाती है। तो अगर यहां बहरामपुरा की टीम मजीद 1-2 विकेटें निकालती है तो फिर मैच जो है दिलचस्प हो जाएगा। अगली गेंद ताहा मीर की, ओवर द विकेट, गेंद की इस मरतबा बैक फुट पर, गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब, बल्लेबाज मुसैब ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। टारगेट 158 का है और अभी भी 13वें ओवर का खेल जारी है। इसके बाद मजीद 7 ओवर्स का आना बाकी। ताहा अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, गेंद की ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन्स के लिए। तो इन 4 रन्स के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 119 हो चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पर। मुसैब के बल्ले से आने वाला ये चौका, 119 स्कोर बढ़ता हुआ मुसैब के बल्ले से ये चौका आया है। अब अगली गेंद का सामना करेंगे ताहा। मुसैब के लिए एक मरतबा फिर बैक फुट पर गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ, रन बनाने का कोई मौका नहीं। दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, 119 है स्कोर और 39 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि कुल मिलाकर 44 गेंदों का खेल बाकी। दीना हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ताहा मीर की, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के ऑप्शन से बाहर, तिरछे बल्ले के साथ गेंद को खेल दिया, गली में फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ताहिर का ओवर जो है अभी तक इस ओवर से कुल मिलाकर 4 रन आए। अब आखिरी गेंद फेंकेंगे इस ओवर की, 119 है स्कोर, 43 गेंदें, 39 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ताहिर ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन की जानिब, और थर्ड मैन गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। एक और चौका आता हुआ यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से, बल्लेबाज थे मुसैब, और स्कोर बढ़ता हुआ 123 हो चुका है। कुल मिलाकर 43 रन है, 33 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि गेंदें बाकी है 42 गेंदें, 33 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 123 है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। ताहा मीर का ओवर मुकम्मल होता हुआ, और अब देखना होगा मजीद जो 33 रन है ये So just 7 more overs to go. If no damage is done to the batting order, this could be a cakewalk for Sephora Cricket Club. They continue to flourish. They continue to score runs quickly. As just 35 runs away of 42 bowlers, less than run a ball chase, 7 wickets in hand, and everything in their favour. As Furkan Johnson will continue, he's going to finish his spell here with the first ball of his final over. He's got pace, no doubt about that, but he has been very expensive. It has costed them arms and legs. 28 he has conceded, and Mansoor decorations at Rafiabad, whether the match will end soon. They just need 35 runs
and Fahim Butt is also watching the game. In the meantime, next ball, and good delivery attacking the stumps as the batter forcibly pushes the ball back to the bowler, and there is no chance of a run at all. Over number 14 in progress, a 123 on board. A single off the next ball takes the score to 124 for the loss of 3. A couple of wickets in those middle overs, but the openers of Sephora Cricket Club, they did a fantastic job by stitching 86 runs for the first wicket, and this one up and over covers, no fielder there, no chance for anybody, as the ball will run down to the boundary for 4. Another boundary being scored takes the score to 129. They just need 29 more runs to win. Well, I can say Sephora Cricket Club are completely at the driver's seat at this stage. Next ball, shot down the leg side. I guess takes the glove off the batter. Wicketkeeper tried his level best to get his hands, but nonetheless it eludes him and goes down to the third man area. Rais Ahmed Butt, absolutely you're spot on. I do agree with you. I'm eye to eye. His batting side has completely dominated the game. There is no doubt about that. It has been a fine session of play for the batting side as they completely come in control of the game. And in the meantime, another 4 has been scored. One more boundary added to the score board takes the score to 134 for the loss of 3. They are just 24 runs away to register a victory here. It has been a dominant show. If we talk about the whole case of the game, whole scenario of the game, MCC Behrampora decided to bat first. Their openers started very strongly. Their openers started very positively, and 65 runs for the first wicket inside 5 overs. But after that, wickets continued to tumble. It was a whole lot story. It was a complete story of the bowling of Sephora Cricket Club. The bowlers bowled exceedingly well, and they bundled out MCC Behrampora or 157. And while in reply, it completely was vice versa. You can see the chase started in a positive way, and they got runs thick and fast, and they lost their first wicket on 85. And this time LBW appealing for them. LBW, and umpire says yes. He just obliges. It was a full ball, and the batter there plays down the wrong line. Wasim has to walk back. He's just taking long walk back to the pavilion, and now they are just few steps away from a victory. 134 for the loss of 4. Now a wicket goes down, but I guess the batter there played down the wrong line, was trying to work the ball on the onside, and he gets wrapped on the pad, and umpire had no hesitation. This time he obliges. He says yes, the batter is out. He's in front of the stumps, and they have lost the wicket number 4 now, and they're still 24 runs away to register a victory, as the batter was trying to play the ball off the back foot, which was fuller in length, was trying to work it on the onside, and at the drop of the hat, umpire had no hesitation at all. At the drop of the hat, umpire signals out, and he walks back to the pavilion, and a wicket here at this stage will mean that a couple of more wickets will bring MCC Behrampora back into the contest, but at this stage they're lagging behind. Definitely, there is no doubt about that. And you see now the batting unit will be at a comfortable position. The batting unit finding themselves in an easy position here, and they have absolutely faced those tough situations. They're chasing 158 and biting the bullet quite easily, and has been a nice chase. It has been a calculated chase of
Sephora Cricket Club, and replying nicely and absolutely knocking my socks off with their batting performance, chasing 158 runs. You know, just keeping wickets in hand and taking those additional risks, and haven't let the side of MCC Behrampora to come back in the game. And they are on the verge to carry the day now. They are on the verge to win the game and knock MCC Behrampora out of the tournament. You see, the batting has been a big cheese today, and the batters looking full of penis. And in comparison to that, the side of MCC Behrampora, they didn't look that too agile. They didn't look that too good in the field, and they'll have to blame themselves. They didn't bat well either. You were given a good start. You needed to stand firm on that start which was provided. But the batters kept committing those mistakes. Bad shot selection has costed them the game. And while in reply, while you come in to chase, the bowlers needed to show some heart. The bowlers needed to show some fight. But unfortunately, it backfired, and they gave way too many runs up front and gave way too many chances to Sephora Cricket Club to come back in the game. And at this stage, Sephora Cricket Club will be eyeing a big victory here with 6 more overs to go, 5 more overs to go, 30 balls and 24 runs to win. Furqan will continue. Munir Masoodi, now they are few steps away from a victory. Couple of big shots here will mean that they will completely boss the game. A first ball of Furqan, a bit of extra bounce, and goes into the gloves of wicketkeeper. Starts with a dot. It's less than run a ball chase. 29 bowlers and 24 runs to win. As I said, no damage to the batting unit, and mean that they will boss the game. They will be in the contest. A single again. And Nazir Shah Ahmed, Walaikum Salam. The inaugural match of Babagund Premier at Babagund of Gonipora Premier League. 137 it is, just 21 away from a victory here of 28 bowlers. As the lefty is out, Faisal Dicock, written on the Creek Heroes, faces Furqan. Wide outside off stump, opens the bat face nicely, clever batting. Goes over third man and into the fence for 4. A boundary takes the score to 141 for the loss of 4. Fahim Altaf watching us from Behrampora. And at this stage, MCC Behrampora are looking completely out of the contest. And Sephora Cricket Club, as the captain said during the toss, we have a good batting unit. And 170, we could chase that score quite easily. In the meantime, a bye is there, and we'll get one more additional run, takes the score to 142 for the loss of 4. The left hand, right hand combination out there. Furqan none for 26, wicketless today, and slips the ball down the leg side. And one more run added to the score. That means they inch closer to the target. And Sephora Cricket Club are completely bossing the game. They played like champions. The batting looks well settled. The bowlers look consistent. And the fielding was absolutely good. And they have knocked out MCC Behrampora in all those departments. And cuts away, cuts hard and down to the third man boundary for 4. One more boundary added to the score, and it takes them to 147, just 11 runs away. And those 11 runs being scored, and they scale the target, they chase down the target, will mean that MCC Behrampora will be out of the contest. MCC Behrampora will be knocked out of the tournament. And in an inaugural game, what a fantastic display of batting we have witnessed from Sephora Cricket Club. And next ball, a slower delivery, works it on the onside, nicely in the gap again. And it will go down to the fence for 4. I guess
MCC Behrampora, they have uh, just thought the game is out of their control. They are just taking the game so lightly now. They know this is over for them. It's 151 for 4 after 16 overs with 12 more bowlers, 24 bowlers to go. And the captain, true to his word, trusting his batters, as we said during the toss, he said we could chase 170 quite easily. And they could have chased it down the score. It's 151. They are just 7 runs away from a victory here. Just need 7 more runs to win. And MCC Behrampora at this stage, the shoulders down, the confidence isn't there, and the fielders inside the field completely looking out of colour at this stage. With 7 more runs to win, look to finish things off in a quick time. They will look to finish the whole game now and to get a thumping victory against this formidable side of MCC Behrampora. First ball driven to long off, but to me, we had analyzed the game. I guess MCC Behrampora lacked in the batting, especially we talk about their fielding has been the talk of the town. The fielding has been absolutely below par. I simply can call it pathetic in the field they were. And they have completely let MCC Sephora Cricket Club to come back in the game. 5 wide scored there. And the scores have been leveled now. 157. The scores are level. Just 1 shot away and to register a victory here. It's a wide and a 4. In the meantime, just 1 run away. And down the track he goes, hits it hard and high up in the air, and it will fall in no man's area. They got the single, and it makes them 157. They still need 1 more run to win. Correction to the score, and the scores are level now. Getting a single, and the lefty has got a chance to hit the winning runs, and he hits the winning runs with that. Drivers uppishly down to the cover for 4. And Sephora Cricket Club have won this game quite easily. It is a big win for them. It is a fantastic win for them. Ishfaq earning the man of the match for the team. They have outplayed in all the departments. MCC Behrampora have been knocked out as Sephora Cricket Club are into the next round. So this is it from Babagund Sports Field as Gonipora Premier League. The first match culminates with Sephora Cricket Club emerging victorious. And congratulations to the side. Hard luck to MCC Behrampora. This is it for the day. We'll join you in a short while after at MET Sports Field. Until then,